the INDI bloc. Remember, the Congress has fielded several big names for Delhi elections, including Sandeep Dixit against the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal. The Youth Congress also registered a case against the Aam Aadmi Party over the new welfare schemes launched by the party. Calling Kejriwal anti-national, Congress blamed Kejriwal for Delhi's miserable state and accused him for prioritizing personal gains over the alliance's goals. First up, here's how the Congress has been targeting the Aam Aadmi Party over the last few days. आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण ये, मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। Now, the Aam Aadmi Party has issued a 24-hour deadline to the Congress party to take action against their leaders for making such statements. They have also said that they are ready to have the Congress ousted and will speak if they do not take action on such leaders. कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। अजय माकन जी ने जो दुस्साहस किया है कि अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल बोला है, उनके खिलाफ कांग्रेस को तुरंत कार्रवाई करनी होगी और साथ ही जो यूथ कांग्रेस ने एक झूठी एफआईआर कराई है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और इनकम्बेंट सीएम के खिलाफ, उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो हम बाकी घटक दलों से बात करेंगे कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर किया जाए। ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत उनको सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि उनको बीजेपी से पैसा मिल रहा है। Now, the Bharatiya Janata Party has called out the divide in the INDI bloc and is citing the Prime Minister's prediction from his Lok Sabha campaign where he forecast a complete breakdown of the alliance following the election. पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया ब्लॉक जैसी कोई चीज पार्लियामेंट में अस्तित्व में नहीं है। तो एनडीए की विधिवत बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। इंडिया गठबंधन का कौन नेता है, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव तथा कथित इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के द्वारा साइन किया हुआ कोई लेटर न लोकसभा अध्यक्ष के पास है न सभापति के पास है। इसका मतलब इनके लिए आज आम आदमी पार्टी जो पहले आम बनती थी अब वो बड़ी खास पार्टी हो गई है। Meanwhile, the Congress has hit back at the AAP and said that the INDI bloc does not need the Aam Aadmi Party. Listen in. तो आपको लगता है इनके 24 घंटे के अल्टीमेटम से कोई हम डर जाएंगे? मतलब हम लोग कोई डरा दिख रहा है आपको? कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया सवेरे से? अरे कुछ नहीं साहब, देखिए ठीक है वो अपनी बात बोलते हैं, बेचारे हताश हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अब उनकी सरकार उनको जाते दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्लियर कर दें, जैसे जैसे कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है और जीतेगी दिल्ली का चुनाव, स्वाभाविक है कि इन्हीं का वोटर हमारे पास ज्यादा आएगा तो बीजेपी का भी। We have Sabyasachi joining us on the broadcast with more details. Sabyasachi, AAP says that if the Congress party does not take action against its leaders, then they will make sure by speaking to other allies that Congress is ousted, that it's kicked out of the INDI alliance. Well, that's right. See, the Aam Aadmi Party has given a clear warning to the Congress party if they don't take any sort of action against Congress Member of Parliament, Mr. Ajay Makan.
Makhan in 24 hours, then the Aam Aadmi Party will speak to the other political parties of the India bloc, and they would be compelled to throw out the Congress party out of the India bloc, and that is the warning given by the Aam Aadmi Party. Whereas the Congress says that they are not threatened by the Aam Aadmi Party, and this is their desperate attempt to make sure, because time and again the Congress party and several of its leaders in fact has termed Arvind Kejriwal as anti-national. In fact, yesterday when the press conference was held by Mr. Ajay Makhan, he had put out 12 points attacking the Aam Aadmi Party, how the Aam Aadmi Party has failed to keep its promises that they have made to the people of the national capital. And in fact, Ajay Makhan stated that it was a mistake of the Congress party to form an alliance with the Aam Aadmi Party back in 2014 for 40 days, and that was a mistake that the Congress party has done. In fact, Ajay Makhan's personal stand also against the Aam Aadmi Party, he has made out clear that that particular time also he was against forming any sort of formation with Arvind Kejriwal, and today also he have the same stand. So as far as the Congress is concerned, their message to the Aam Aadmi Party is very much clear, that they are not afraid with the threats coming in from the Aam Aadmi Party, and they would continue to expose them. Right, but the Aam Aadmi Party has now given a deadline, to which Congress leader Sandeep Dikshit has responded saying, हम डरते नहीं हैं ऐसी डेडलाइन से. Well, that's right. Sandeep Dikshit clearly states that he is not afraid with such a sort of deadline, with such a sort of threatening coming in. In fact, time and again, whether it is Sandeep Dikshit or Mr. Ajay Makhan, they have termed Mr. Arvind Kejriwal as Farziwal, and they have said that only Farziwala is being done by the Aam Aadmi Party. Time and again, strong criticism has come in from the Congress party, whether it is Arvind Kejriwal coming out and stating that there won't be any sort of alliance with the Congress party here in the national capital. See, once the Lok Sabha polls is over, so the stand between the Aam Aadmi Party and the Congress is very much clear, whether it is here in the national capital or is in the state of Punjab. There is no alliance between them. So under these circumstances, both the political party will continue to exchange words against each other, and the Congress party clearly states that they are not going to back down from its attack on the Aam Aadmi Party, and the warning given by the Aam Aadmi Party that Mr. Ajay Makhan has to withdraw his statement, and 24 hours time ultimatum has been given, to which several of the Congress leaders, whether it is Sandeep Dikshit or other leaders, in fact have made it out clear that the Congress party stands firm in their decision. All right, so the Congress has also hit back at the Aam Aadmi Party after they gave an ultimatum saying if you do not take action against your party leaders, then they will speak to other allies and make sure that Congress is ousted.